Hi all, myself Sakshi. I took my NEET UG coaching from Aakash Institute Janakpuri, and today I am at Maulana Azad Medical College, which you all know is a very famous college in medicine. So like a year back, I was in the same situation as you people are. I was facing the same things which you are facing right now. See, this is the phase when you have to keep the hopes high, when you have to hold yourself stronger, when you have to think what can happen after NEET. Don't just think about stress, struggle, which you are facing now. Just focus that at what position you can reach after NEET, right? And whenever what I really used to do when I got stressed is I used to meditate a lot. It really boosts me. It really used to boost me, and music was a very work like a therapy for me, you can say. And what else you can do is talk to your parents. They'll always support you, people, trust me, they'll always support you. One more point which I want to highlight is just analyze your mistake a lot. It's very helpful, you know. Talk to your teachers about that. What else I did is I listened to lots of motivational videos. They really boost you, people, so do try that. और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी विच आई यूज़ टू डू इज़ मैं सारे टेस्ट देती थी. आई नेवर स्किप्ड अ सिंगल टेस्ट, एंड दिस ट्रस्ट मी पीपल, दिस गोना हेल्प यू अ लॉट मैन, अ लॉट. सी, मेरे टेस्ट में कभी बहुत गंदे मार्क्स भी आए, बहुत अच्छे मार्क्स भी आए. जब अच्छे मार्क्स आते थे आई यूज़ टू गेट मोटिवेटेड, मैं बहुत खुश हो जाती थी और खुश होकर अगला टेस्ट देती थी. और जब बहुत कम आते थे तो आई यूज़ टू टॉक टू माई पेरेंट्स, माई मेंटर्स. वो मुझे बहुत नई चीज़ें बताते थे कि सी व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस. और फिर दैट यूज्ड टू बी अ काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर मी, और वो देख के मैं और अच्छे से नया टेस्ट दे पाती थी. एंड व्हाट एल्स, लाइक एरर एनालिसिस मैं बहुत अच्छे से करती थी अपने टेस्ट पेपर्स का. आई यूज्ड टू हाईलाइट ऑल दोज पॉइंट्स विच गॉट रॉन्ग एट दैट टाइम, और उनको तो अच्छे से करके ही जाना है एग्ज़ाम से पहले. दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट इन माई लिस्ट. और भी लाइक टाइम मैनेजमेंट इज़ अ वेरी नाइस पॉइंट यू कैन ऐड टू योर नीट. यू मस्ट ऐड टू योर नीट प्रिपरेशन. टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, पीपल ट्रस्ट मी. See, it's your choice which section you want to do first, whether it can be biology, chemistry or physics, and you have to decide the time. See, it's a very important deciding point which can decide your rank actually, you know. और एक और चीज़ what I really used to do is, see, at the end of the day you have to stay calm. That's the most important thing which I really feel. क्योंकि मेरे बहुत सारे friends हैं जो मेरे से बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, but they did bad because of the hesitation. So I would really recommend कि stay calm, people. And yeah, I wish you all the very best for your upcoming NEET, which is on 17th of July. So yeah, all the best.